Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani will be laid to rest in Rajkot today. His body is handed over to the family and he will be flown to Rajkot from Ahmedabad. He will get a public tribute. He did get a public tribute between 2:30 p.m. and 4 p.m. followed by a final darshan and a state protocol farewell in the evening. In his honor, Rajkot has declared a voluntary half-day closure. Prayer meetings are scheduled for 17th June in Rajkot and 19th and 20th June in Gandhinagar. Meanwhile, efforts to identify victims of the crash continue. So far, 92 DNA matches have been completed and 47 bodies have been handed over to their families. The devastating Air India crash claimed over 270 lives, leaving many families still awaiting closure. दुख की घड़ी में, ये दुखद दुर्घटना में सभी मृतकों को हमारे पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ये दुख की घड़ी न सिर्फ हमारे परिवार के लिए है, पर बाकी 270-280 परिवारों के लिए भी आपत्तिजनक समय है। ये ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करें। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारी दोस्ती 60 वर्ष पुरानी है, 60 इयर्स, इसलिए कि हम साथ में पढ़ते थे 1 से 7 स्टडी तक। बहुत सरल स्वभाव के थे, नानपण से हम पहचानते हैं। तो जब सीएम हुए तो हमारी दोस्ती तो कायम ही रही। गांधीनगर भी बार बार मुझे बुलाते थे कि महेश भाई आपको टाइम है तो आ जाओ, हम साथ में बैठेंगे, बातों करेंगे। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? कहा जा रहा है कि जिस दिन वो लंदन जाने वाले थे उस दिन आपने बात की थी। कितने बजे बात की थी? तब क्या बातचीत हुई थी? वो लंदन जा रहे थे, उसके अगले दिन वो पंजाब थे, पंजाब से आए तब भी बात हुई थी। और उसकी डॉटर की तबीयत अच्छी नहीं थी लंदन में, तो वो देखने जा रहे थे। तो 1 बजे गुरुवार को 1 बजे 3 मिनट पर वीडियो कॉल से मेरी सिर्फ 9 सेकंड बात हुई थी। बेस्ट ऑफ जर्नी की और बेबी का ध्यान रखना, ऐसी बात हुई थी। उसने बोला कि आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ऐसी बात हुई थी। और 1 घंटे के बाद मैंने जब यह हादसा सुना तो मैं एकदम कांप गया था कि 1 घंटे में ऐसा हो सकता है। तब मेरे को बहुत दुख हुआ। 2 दिन तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया कि भाई ये कैसे हो गया। Joining us now is Brijesh Doshi from Rajkot. He's in front of Vijay Rupani's residence. Brijesh, can you tell us what is the situation over there? Are people coming in to pay respects? And when can we expect the final rites to happen? See, right now we are at the residence of former Chief Minister Vijay Rupani. His mortal remains have reached to the Rajkot and in a short while from now it will reach to his residence as well. The Union Home Minister Amit Shah and the BJP National President JP Nadda will give the last tributes to Vijay Bhai Rupani, the former Chief Minister and the in charge of Punjab BJP. He was the in charge of Punjab BJP as well. So both the leaders have reached to the Rajkot. They will stay here till the funerals of the Vijay Rupani and will meet the family of the Vijay Rupani as well. So right now, I would just like to show you the visuals of the place where the mortal remains of the Vijay Rupani will be here. The portrait of the Vijay Rupani as well, where everyone will be able to give the last rites. The last darshan of Vijay Rupani will be held here, where the top leadership of BJP will give the last tributes to former Chief Minister Vijay Rupani. And then on at 5 to 6 p.m. His last yatra, the final journey of Vijay Rupani will start from his residence to the funeral home. So at around 6 p.m. the last rites will be done at the Rajkot funeral house, where all the BJP leaders, the family of the Vijay Rupani will be there, and right. BJP Karyakartas will join the last journey of their beloved leader. Right. Thank you, Brijesh, for all those details.